तो कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. टुडे वी विल सॉल्व एग्जाम्पल रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर. आइए देखते हैं एग्जाम्पल 3.10. A resistance of R ohm draws current from a potentiometer. Battery of voltage V, and here resistance of R ohm is given. The potentiometer has a total resistance R naught ohm. This is A, this is C. Between A and C, what is connected? Potentiometer wire, and resistance of potentiometer wire, that is R naught ohm. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. This is the sliding contact which can slide over this wire. Right now they have given sliding contact is in the middle of the potentiometer wire. So we have to keep this sliding contact in the middle of this wire, and they are asking us to find expression for the voltage across R. This R is connected between A and B. If voltage drop across A and B is available to us, then we can say that voltage drop across R is nothing but VAB. तो पहले क्या फाइंड कर लेना चाहिए हमें? पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहिए. Here the sliding contact is in the middle of this potentiometer wire. Therefore half of the wire will offer half of the resistance R naught by 2, total resistance, that is R naught. Therefore half wire will provide R naught by 2 resistance. When sliding contact is in the middle of the wire, at the time resistance of the half wire will be R naught by 2, and R naught by 2 and R are in parallel. अगर इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो कैसी इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी? ध्यान से देखो, कुछ ऐसी सर्किट बनेगी. दिस इज V, A, B and C. R naught by 2, R naught by 2 and R. R naught by 2 and R are in parallel. So first of all we should find effective resistance between A and B. Once effective resistance is available to us, we can easily find current flowing through the potentiometer. Once current is available, using Ohm's law we can find potential drop across AB. Using Ohm's law V is equal to IR, easily we can find potential drop across AB. तो हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है अक्रॉस R, तो पहले क्या निकालना चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, फिर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है, रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. आइए पहले फाइंड करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. दिस इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B आई एम टेकिंग R1. इसको क्या नाम दे देते हैं? R1. फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट R naught by 2 and R are in parallel. When two resistors are connected in parallel at the time, what is the formula of equivalent resistance? 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Here equivalent resistance, that is R1. Therefore 1 upon R1 is equal to 1 upon R naught by 2 plus 1 upon R. Correct? So this can be written as 1 upon R1
is equal to denominator numerator 2 by r naught plus 1 upon r. Therefore this can be written as r naught 2r plus r naught, that is nothing but 1 upon r1. Therefore r1 is equal to r naught upon 2r plus r naught. इक्वेशन नंबर 1. चलो R1 तो हमें मिल गया, दैट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. चलो R1 अवेलेबल है, क्या फाइंड कर लें? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर. तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो हमें फाइंड कर लेना चाहिए. चलो करंट फाइंड करना है तो क्या करें, फिर से इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं. कैसी इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी, ध्यान से देखो. ये हो गया हमारा V, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C. नाउ व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज R1. एंड व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, दैट इज R0 by 2. एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर, दैट इज I. कितना करंट फ्लो हो रहा है? I. नाउ इजीली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. I is equal to V by R. लगा लो. I is equal to V by total resistance. What is the total resistance? R1 and R0 by 2 are in series. R1 and R0 by 2 are in series. तो सीरीज का फॉर्मूला हमें मालूम, R1 plus R0 by 2, right? Therefore I is equal to V, taking LCM, 2R1 plus R0 divided by 2. I is equal to V upon 2R1 plus R0 by 2. Denominator numerator. Therefore I is equal to 2V upon 2R1 plus R0. This is the value of electric current. अब हमारे पास I है, हमारे पास R1 है. व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, दैट इज IR1. यस और नो? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज नथिंग बट IR1. फिगर पे से क्लियर है. तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB अवेलेबल है, सेम विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, बिकॉज दिस R0 by 2 and R are in parallel. And in parallel condition, potential drop remain same. Potential difference between resistors connected in parallel remain same. That is the speciality of parallel combination. जितना potential drop A और B के बीच में होगा, उतना ही R0 by 2 के बीच में होगा, उतना ही R के बीच में होगा. तो एक बार हमें VAB मिल जाए, वही होगा वोल्टेज अक्रॉस R. चलो क्या फाइंड कर लेते हैं? VAB. क्या फाइंड करते हैं? VAB. आइए देखते हैं क्या बनेगा VAB. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज नथिंग बट करंट I इंटू R1. I, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 2V अपॉन 2R1 प्लस R0 into R1. What is the value of R1? R0 upon 2R plus R0. Correct? Now this can be written as 2V R0 into 2R1. What is the value of R1? 2R1, R1 that is R0
अपॉन 2r प्लस आर नॉट इंटू 2r प्लस आर नॉट here. If we multiply this 2r plus r naught inside the bracket, then this can be written as ये क्या मिला हमें VAB। चलो आगे लिखता हूं मैं VAB इज इक्वल टू क्या बनेगा 2VRR नॉट अपॉन 2RR नॉट इंटू 2R नॉट अपॉन 2R प्लस आर नॉट इंटू 2R प्लस आर नॉट। प्लस आर नॉट इंटू 2R प्लस आर नॉट। This 2r plus r naught will get cancelled. Therefore, this can be written as 2VRR naught upon 2RR naught plus 2RR naught plus r naught square. What can we take common? R naught. Therefore, this can be written as 2VRR naught upon R naught into 2R plus 2R plus R naught. R naught will get cancelled. 2R plus 2R 4R. So this can be written as 2VR upon 4R plus R naught. This is the potential drop across AB. Whatever is the potential drop across AB, same is the voltage across R, because R is connected in parallel with R naught by 2, and in parallel connection potential drop remain same. So VAB is equal to 2VR upon 4R plus R naught. So this is the answer. Voltage across R is 2VR upon 4R plus R naught. कैसा लगा एग्जाम्पल 2.10? बिल्कुल आसान, सिर्फ हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाते आना चाहिए। यहाँ से क्लियर है कि ये R नॉट बाई 2 और R किस में है, पैरेलल में। एक बार उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर करंट फाइंड कर लो, फिर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर लो, V इज इक्वल टू IR। सो इजीली वी कैन ऑब्टेन वोल्टेज अक्रॉस R। लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम related to current electricity. Two wires of equal length, one of aluminum and the other of copper, have the same resistance. क्या क्या दिया हुआ है? Two wires of equal length, मतलब length of copper wire and aluminum wire is same. Have the same resistance. Resistance is also same. Resistance of aluminum wire is same as the resistance of copper wire. Which of the two wires is lighter? अगर रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है, तो किसका मास कम होगा? Which of the two wires is lighter? That we have to find. चलो, रेजिस्टेंस और लेंथ की वैल्यू दी हुई है और इस पे से हमको मास फाइंड करना है, तो हमें कंपेयर करना है किसका मास ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। RAL is equal to RCU, that is given to us. Therefore we can write what is the formula of resistance? Rho L by A, resistivity of aluminum wire, length of aluminum wire upon area of aluminum wire is equal to resistance of copper wire, resistivity of copper
length of copper upon area of copper wire. But length of aluminum wire and length of copper wire is same. Therefore, LAL and LCU will get cancelled. Therefore, we can write rho AL upon AAL is equal to rho CU upon ACU. Therefore, we can write ACU upon AAL is equal to rho CU upon rho AL. Equation number 1. Now we got the relation between area and resistivity. Ratio of area of copper wire to aluminum wire is equal to ratio of resistivity of copper wire to aluminum wire. इक्वेशन नंबर 1. चलो ये एक रिलेशन मिल गया. हमें क्या फाइंड करना है? मास. Here what they have given? Resistivity of aluminum wire is given to us. Resistivity of copper wire is given. Relative density of aluminum and copper is also given. Density that is available to us. We know the formula of density. What is the formula of density? Density is equal to mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. Therefore, mass is equal to density into volume. Mass is equal to density into volume. We are interested in fraction of mass, that is mass of copper to mass of aluminium. एक बार हमें इसका रेशियो मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कौन हेवी है. Mass of copper to mass of aluminum can be written as density of copper into volume of copper upon density of aluminum into volume of aluminum wire. Density of copper, that is 8.9, upon density of aluminum, that is 2.7, into volume that is not available to us, but for any wire of length L and cross sectional area A, volume is nothing but area into length. Volume is nothing but area into length. So instead of volume we can write area into length. So volume of copper is nothing but area of copper wire into length of copper wire upon area of aluminum wire into length of aluminum wire. But LCU is equal to LAL. Length of copper wire is same as the length of aluminum, so this will get cancelled. Therefore, this can be written as 8.9 upon 2.7 into area of copper wire to area of aluminum wire is nothing but rho Cu by rho Al. Because from equation 1 एरिया हमारे पास नहीं है पर रेजिस्टिविटी तो है, तो रेजिस्टिविटी है तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी 8.9 इंटू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर 1.72 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 2.7 इंटू resistivity of aluminum wire, that is 2.63 into 10⁻⁸ ohm meter. 10⁻⁸ will get cancelled. 8.9 into 1.72 upon 2.7 into 2.63, that is nothing but mass of copper upon mass of aluminum, that is 2.16. Therefore we can say that MCU is equal to 2.16 times
mass of aluminum wire. It means mass of copper wire is 2.16 times mass of aluminum wire. So what they are asking, which of the two wires is lighter? We can say that aluminum wire is lighter. Aluminum wire is lighter than copper wire. Here two wires are given, one is of copper and one is of aluminum. Both are having same length, both are having same resistance. अगर एक एल्यूमिनियम का वायर लिया जाए और एक कॉपर का वायर लिया जाए, दोनों की लेंथ अगर सेम रखी जाए और दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम हो तो कौन सा लाइटर रहेगा? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर. देयरफॉर in overhead transmission of power, aluminum wires are used because here aluminum wire is lighter in comparison to copper wire. To avoid weight breakdown, we use aluminum wire instead of copper wire because aluminum wires are lighter in comparison to copper wire. तो ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन में किसका यूज़ किया जाता है? एल्यूमिनियम वायर का, क्योंकि उसका वेट जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में? कॉपर की कंपैरिजन में. तो क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया? नाउ दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू? वेरी गुड. नाउ आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज न्यूमेरिकल इन होमवर्क. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.12 I am giving you in homework. 3.12. Try to solve this numerical on your own. This is a numerical based on theory potentiometer. Just you have to apply the formula for comparison of EMFs. When we compare the EMF of two cells at the time E1 by E2 is equal to L1 by L2, just that formula you have to apply in this numerical and you will get answer. Very simple numerical it is. Try to solve this numerical 3.12. With this I am ending today's lecture. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.